चलो अभी आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, रिस्क का बोलना अलग चीज़ है, लेकिन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, समझना, इवैल्यूएट करना, उसके लिए स्टेप्स लेना, दैट्स वेयर रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन। जैसे मेरे लिए आने वाला दिसंबर अटेम्प्ट इज अ रिस्क, तो उसके लिए मैंने क्या स्टेप्स ली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ हूँ, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए तो उस सिचुएशन को मीट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, 1 जून से लेके 30 जून तक मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि इस एक महीने में मई 30 तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ, एटलीस्ट 1 रीडिंग। फिर जब मैं जुलाई में आऊँगा तो जून की रीडिंग हो जानी चाहिए, अगस्त में आऊँगा तो जुलाई की रीडिंग हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं सितंबर आता हूँ तो मेरे पास एक महीने की एक रीडिंग बाकी है। रॉन्ग? क्लियर? तो समथिंग, रिस्क मैनेजमेंट उसी चीज को कंटेम्पलेट करते हैं, दैट इज हम अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं उस गेम के लिए। जब आप एक आईपीएल का मैच देखते हैं, फाइनल मैच देखते हैं, द प्लेयर इज प्लेइंग ऑसमली, या वो भाग रहे हैं, या वो उसका स्टेमिना देखो, वो खेल रहे, लेकिन उसके पीछे कितनी टाइम की प्रैक्टिस है, कितने महीनों की प्रैक्टिस है वो। तो वो आपको तब समझ में आता है जब आप एक्चुअली ऑन द फील्ड जाके देखते हो। वी हैव सीन ऑन द फील्ड, शिवाजी पार्क, इधर उधर, वो कितने टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं अपने एक एक बैट के स्टेप को बिठाने के लिए कि इफ द बॉल टर्न्स दिस वे, आई नो व्हाट्स द एंगल टू टेक। ओके, यू कैन लिसन, रीड फ्रॉम सचिन्स बायोग्राफी ऑल्सो। Every morning 5 a.m. he was there on the field improvising that bouncer ball because Shoaib used to put the ball seedha on the face. So how do I lift it high to make it a six? He says I was practicing like anything, मुझे वो बॉल हिट करनी है, and he did that. उसके सेंचुरीज में से एक दो तो ऐसे ही सिक्स थे, जो बाउंसर बॉल आई थी उसने सिक्स मारा है। तो दैट शोज डिटर्मिनेशन। रिस्क मैनेजमेंट वो रिस्क था, वो उसको पूरी गेम से बाहर भी निकलवा सकता अगर वो उसको नहीं हिट कर पाए। उसका लिविंग एग्जाम्पल विनोद कामली था, उसी का दोस्त, बचपन का खेल, लेकिन वो हैवी और चेंजिंग बॉल्स को टैकल नहीं कर पा रहा था। ही वॉज आउटमोटेड, रिमूव फ्रॉम द टीम। ओके, सचिन हैज टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू चेंजेस। उसको रियलाइज हुआ कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और ये बॉलर्स बहुत अलग तरह के इन स्विंग आउट स्विंग डालते हैं, तो इनको कैसे टैकल करना है। क्लियर? So that's what learning from the sports, learning from different angles comes into it. Okay? तो अब रिस्क मैनेजमेंट है क्या? ये रिस्क मैनेजमेंट is a term to describe the process. The process is a term to describe the process which aims to assist organizations identity, understand, evaluate, and take action, on their risk, with the view to increasing the probability
of their success. Of their success and reducing impact and likelihood of failure. Okay, that's exactly risk management. It's a term, it's a process. In fact, आपको मैं बताऊं तो read a book called Atomic Habits. It is talking that thing, 1% improvement, small improvements, daily, dedicatedly, disciplinedly, consistently done, has a impression of more than 300%. उसका इफेक्ट 300% से ज्यादा पड़ता है if you improve 1% daily. आप बुक पढ़ के देखो, रिस्क मैनेजमेंट इज दैट, छोटे छोटे प्रोसेसेस ले डाउन करके हम अपने सक्सेस की तरफ, अपने गोल्स की तरफ कैसे जाते, दैट्स व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. ओके, लाइफ में हर एक टाइम के बाद एक एक प्लेटफॉर्म आता है. So every 1 year you set your targets to do something, and every day you set your targets to do something. What is called 1% improvement. अगर आप 18 घंटे दिन में जागते हो या 16 घंटे चलो जागते हो, तो 16 घंटे के हिसाब से सिर्फ 16 मिनट्स इज 1%. दैट्स इट. क्या 16 मिनट्स के लिए आप अपना रिवीजन नहीं कर सकते जो कुछ दिन में हुआ है? इज दैट ऑल? And if you do it 16 minutes in a day, it can have implications in coming days. And if you have a backlog, ठीक है, तो फिर पीछे वाला डिवीजन करने के लिए थोड़ा 16 मिनट्स और दो. ठीक है, so that's how it is. I'm not saying 24 hours you are waking. अगर 24 hours है तो 24 minutes का रिवीजन होता है, that means generally. लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपका वेकअप आवर्स लो, उसके हिसाब से 16-15 मिनट का रिवीजन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बट हार्डली वी डू दैट. हम लोग दिन का खत्म होने के बाद कितना देखते हैं. So that's gradually called backlog. ये हमारे टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि रिस्क कहाँ पे फ्लो होते जाएगा. ये धीरे धीरे पाइल अप होते जाएगा और बाद में in the month of September end it will be like 9 subjects. Suddenly it becomes 9 subjects. Okay? तो ये अपने रिस्क है. और भी बिजनेस में अपने अपने रिस्क फ्लो करते हैं. ठीक है? तो what exactly is this? हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव, और मजे की बात है इसमें कुछ अलग से नहीं. आज आप मैनेजमेंट के कोर्सेज करो या दूसरे करो, यही सब चीज़ों में से आपको सिखाया जाएगा. मार्केट में कई कोर्सेज चल रहे हैं. FRM को कोर्स होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. देन देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट कोर्सेज आल्सो बाय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो उसमें कुछ अलग सिखाया जा रहा है? नहीं, सेम थिंग. ओके, so it's up to you whether you want a degree in a risk management or whether you want to learn risk management. You can read the books and learn that too. ठीक है? So effective risk management gives comfort to shareholders, customers, employees and stakeholders. Rather इन सबको stakeholders ही बोलते हैं. ये उनको एक तरह का कुशन, एक तरह का कंफर्ट दे देता है. एंड रिस्क मैनेजमेंट requires a detailed knowledge and understanding of organization. Okay, and that's true. It's like, do we understand ourselves?
दैट्स वेयर द रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर. आपने एक वर्ड सुना होगा, SWOT. ये व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? When somebody says what are my strengths, पहली बार तो जब मैं SWOT एनालिसिस सुना था तो बोला SWOT एनालिसिस होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ वीकनेस. ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं वो बताया नहीं किसी. फाइनली डाउन द लाइन, रीडिंग सो मेनी बुक्स, रीडिंग सो एंड सो. इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे आई स्टार्टेड विद रीडिंग बुक्स. आई कंप्लीटेड नियरली 157 बुक्स रीडिंग. तो रीडिंग सो मेनी बुक्स आई रियलाइज व्हाट इज दिस. आप गूगल पे जाओ और वहां पे डालो स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और फिर स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन के स्ट्रेंथ्स क्या क्या होते हैं, और फिर जाके देखो इसमें से मेरे वाले कौन से हैं. तब यू कैन आइडेंटिफाई. व्हेन यू हैव वर्ड, व्हेन यू हैव नंबर्स फॉर समथिंग, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये है, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स. डाउन वीकनेसेस ऑफ ह्यूमंस. और व्हाट आर द वीकनेसेस इन स्वॉट एनालिसिस? लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, 200-300 की लिस्ट है ओनली वीकनेसेस की, और उससे भी ज़्यादा है. तब मालूम पड़ता है अच्छा इसमें से मेरी आइडेंटिफाइड वीकनेस क्या है. और अगर आपको कोई टर्म समझ में ना आए, गूगल में उधर ही ट्रांसलेटर है, उठा के डाल दो, जिसमें भी चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू गुजराती, सब मिलता है. तभी मालूम पड़ता है अच्छा इसका मतलब ये है, दिस इज माई वीकनेस. फर्स्ट टाइम इट इज लाइक आई वॉज लाइक माई गुडनेस, दिस वॉज, ये छोटी छोटी वीकनेसेस है जो हमने कभी सोची नहीं थी और होती है. व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स? आइडेंटिफाई. उधर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. तब आपको एक नया फिगर मिलेगा, एक नया पर्सन लुकिंग इनटू द मिरर, एक नया आइडेंटिफिकेशन मिलता है. रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ योरसेल्फ. ओके, नो दाई सेल्फ. तो ये जरूरत है. ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को जानना चाहती है, पर ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात, हम यहां से शुरू करें तो ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाएंगे. डू वी हैव द नॉलेज ऑफ आवरसेल्फ? ओके. एंड देन इट सेज, यू कैन से, क्या लिखूं मैं, हाँ, बेटर रिस्क मैनेजमेंट provides early warning. Yes. You come to know what is happening and then you can take the steps rightful time. So also we can say that risk management requires commitment at top management, or rather from top management. Okay. तो अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो यू, द टॉप मैनेजमेंट हैज टू डू द कमिटमेंट. अपने में टॉप कौन है? ये रहा, दिस इज द टॉप. इधर जो सोचा उधर कमिटमेंट चाहिए. दैट्स हाउ इट इज. फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता. Okay, so it needs that commitment to do something in your life. Clear? And risk management process provides a framework to दो चीजें बोल सकते हैं. ensure foreseeable risk are understood and accepted before important decisions. And monitor the new projects
the new projects to ensure they continue to develop without much risk. Okay, so that risk management provides a framework that you have a foreseeable risk. What is the foreseeable risk? The foreseeable risk is, सर मुझे पता था ये क्वेश्चन है किधर. ये रिमार्क मेरे को कई बार आता है. क्या पता था? मुझे पता है कि मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए. मुझे पता है कि स्कैनर के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए. मुझे पता है कि वो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस वापस आते हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो पढ़ता नहीं हूँ. मैंने क्या उस क्वेश्चंस को पढ़ के सोचा कि अगर मुझे इसका आंसर लिखना होगा तो क्या आएगा. मुझे क्वेश्चंस उतने तो पता है. देयर कुड बी सरप्राइजेस इन द एग्जाम्स, ओके, बट दैट कुड बी ओनली 10 to 15 मार्क्स. व्हाट अबाउट द 85 मार्क्स ऑफ पेपर? वो तो मेरा होना चाहिए, उसमें से तो आई शुड स्कोर गुड. बट दैट्स वेयर वी, हमें वो वाला याद रहता है जो हम छोड़ के आ गए थे. तो वो याद नहीं रहता है जो हम करके आ गए हैं. ओके, एंड एग्जैक्टली वी हैव सर्टन थिंग कॉल्ड फोर्सिएबल. ये तो मालूम है ये आएगा, चल बाहर का या कुछ अलग तरीके से फ्रेम किया मेरे को नहीं आएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना तो आता है. एंड मॉनिटर द न्यू प्रोजेक्ट्स टू कंटिन्यू डेवलप विदाउट मच रिस्क, बिकॉज देन यू नो दैट दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन. देन व्हाई द हेल यू हैव नॉट टेकन द स्टेप्स? Okay, so risk management requires you to take that steps. Okay, and that's why it is said that risk management should be made as a part of a corporate strategy. What is a corporate strategy? It's very much a part कि आपके daily process का उसको part बनाओ. It's not a rule or responsibility, it's your daily process. Okay, you wake up in the morning, you don't set up a rule that I should be going to loo. You go accordingly. It's a part of your natural or daily process. Okay, so and then we can say risk management is a part of corporate strategy. Okay? Risk management becomes a part of corporate strategy. Perfect. तो अगर risk management is a part of corporate strategy, हाँ ठीक है. तो इसके फायदे क्या? If we can do risk management well, what are the advantages of risk management? What are the advantages of risk management? Clear? जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो कई फैक्टर्स काउंट करते हैं. फर्स्टली, रिस्क मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग एंड prevent wastages of time and effort. Okay, so that's correct. That's correct. In fact, आपके खुद के लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखो, आपके खुद के लिए आप चीज़ें मैनेजमेंट देखो. सुबह से लेके रात तक या तब आपके सोने तक आपका पूरा दिन जाता किधर है? इट्स जस्ट दैट यू हैव ओनली क्लासेस और यू हैव अदर कमिटमेंट्स. आपका पूरा दिन जाता किधर है? एंड सी इट फॉर 2 weeks so that you identify properly your targets, and then you can have a small calendar kept on your table that अगर आपने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, जिस दिन आप अचीव करते हो पुट अ टिक, जिस दिन नहीं करते पुट अ क्रॉस. You know how many ticks in a month and how many crosses in a month or how many ticks in a week and crosses in a week you have collected. तब आप उसको measure कर पाओगे. What you can measure, okay, is what you can progress, what you can manage. Clear?
तो कॉस्ट सेविंग हो जाता है, उतना टाइम बच जाता है, उन्हीं चीजें संभल जाती है इफ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स प्रॉपरली। तो रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। एंड अनदर फैक्टर दैट रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स यू इज दैट इट helps to prepare, plan for opportunities, prepare, plan for opportunities in courses of business. Okay, so that's essential. Yes, you have to prepare your plans. One of the things that you can do is, मैं CS हो जाऊं तो उसके बाद क्या? CS is not my plan, it's a degree, it's a certification that I'm not selected for the performance. It's like one of the stage show is happening and I'm selected. India's Got Talent. I got talent. Okay, I got selected. Abhi aage, the performance is needed. Okay, so make your plans for that. And it improves strategic and business planning. Strategic and business planning. It establishes reliability among stakeholders. Okay, among stakeholders. And sound risk management practices and sound risk management practices reassure key stakeholders throughout organization. Okay, so yes, it does help in many factors in many areas. अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको कॉस्ट सेविंग लगता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है. Remember, risk flows with opportunity. A threat has to come with an opportunity. Every coin has the other side. You yourself have the other side, but you have not seen it or evaluated it. Okay? ऐसा नहीं है कि दम नहीं है, दम है, बहुत बहुत कुछ करने का दम है, लेकिन कभी उस चीज को बाहर निकाल के कोशिश नहीं की है. ऐसा है. Okay, and that's where why don't we evaluate the other side? Because there is a level of risk, because reality hits. Risk come with a threat ना, opportunity come with a threat. अगर अपने आप की दूसरी साइड देख ली तो it will hit you hard. Okay, but yes, it will improve you for a longer term then. ठीक है. अब इस चीज को कैसे चेंज करें, हम अपने परसेप्स को कैसे चेंज करें, चीजों को कैसे इम्प्रोवाइज करें, वो चीजों को चेंज करने के लिए इसी के स्टेप्स अपने को काम आएंगे. दैट्स कॉल्ड स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस. स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, अपने वर्ड्स में लिखना है. आज तक तुम बोल रहे थे ना, सर हमारे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं क्या? आ गया सब्जेक्ट, लिखो 100 मार्क के लिए अपने वर्ड. बताओ तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे कौन से वर्ड्स है तुम्हारे? So now you will actually see, writing in your own words, how well you can write in your own words.
तो हम ऐसा क्या करें जो हम समझे चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना, दैट्स कॉल्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को आइडेंटिफाई करना प्रॉपरली। दूसरा है रिस्क एनालिसिस, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, व्हाट इज द लेवल ऑफ एनालिसिस। तीसरा है रिस्क का असेसमेंट करना, ओके, एंड फोर्थ इज हैंडलिंग ऑफ रिस्क, ओके। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ जैसा समझो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एंड हैंडलिंग ऑफ सेल्फ। तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाते हो, दैट इज व्हाट इज द रिस्क दैट वी आर प्लेइंग विथ, व्हाट इज द लेवल वेयर वी आर एग्जैक्टली। देखिए करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, risk identification risk identification is the first stage in process, okay? And that's the correct stage also, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे व्हाट यू आर, you will not be proceeding ahead. And the origin of the risk has to be identified. ठीक है, तो origin of the risk has to be identified. That means क्या एज a student मैं कम पढ़ता हूँ इसलिए मेरे को डर लगता है, मैं क्यों ऐसे इन चीज़ों से डरता हूँ, मैं चीज़ों को अवॉइड करता हूँ इसलिए उससे डरता हूँ। Why am I getting a risk factor with myself? That's called identification. Okay. Then organization can study the activities and place where its resources are at risk. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को स्टडी करती है कि रिस्क के फैक्टर्स आते कहाँ कहाँ हैं, ओके, वेयर द रिसोर्सेज आर एट रिस्क। तो वही चीज़ें अपने को भी समझनी है कि हमारे फैक्टर्स है का, एंड देन यू हैव द करेक्ट, you have to take correct risk identification ensures effective risk management. ठीक है, अगर आप ये समझ पाओ कि आपके एरियाज ऑफ रिस्क क्या है, लाइफ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिस्क है, या अपने गोल्स को पाने के लिए क्या रिस्क आप फेस कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, तो आपका मेन काम, या यूँ बोलूँ आधी जंग तो उधर ही जीत गई, क्योंकि अब समझ में आ गया कि मुझे मेरी गलतियाँ किधर है और मुझे इम्प्रोवाइज क्या करनी। ठीक है, देन इफ risk management fails to identify the possible challenges
the possible challenges, then the non-identified risk will become non-manageable. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मैनेजेबल नहीं होता है. जैसे लेट्स सपोज you have a girlfriend and she left you suddenly without giving any reason or explanation, and you're thinking हुआ क्या था. Okay, हुआ क्या था. I'm like पता नहीं क्या हुआ था. Why she left समझ में नहीं आया. Okay, so in that case the possibility, what happens when you are not able to identify the reasons, that thing suddenly दिमाग में वो घूमती जाती है. पर हुआ क्या था, क्या हुआ होगा. That area always remains. Okay, so something as a close person to you अचानक से छोड़ के चले जाए तो it is a problem. That's what happen in organization, कि हम क्या चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जिसके वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई. तो हम क्यों नहीं कर पा रहे वो चीज आइडेंटिफिकेशन. और क्या हुआ, एक प्लेन क्रैश होता है. अब एक प्लेन क्रैश है तो इट्स अ सिंपल प्लेन क्रैश, लेकिन पूरी यूनिट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी गोज बिहाइंड टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ दैट क्रैश. वो ब्लैक बॉक्स में पता करना कि क्या नोटिंग्स चल रही थी, क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या रीजन है, सो दैट इट कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर. वो पागलों की तरह उधर ढूंढते हैं, सारे डेब्रीज ढूंढते हैं कि क्या हुआ था. ओके, MH370 का जब क्रैश हुआ था, जो प्लेन मलेशिया से चाइना जा रहा था, 2 साल उसके डेब्रीज ढूंढते रहे. क्यों, पागल है क्या वो लोग. क्रैश हुआ तो क्रैश हो गया, लेकिन उसको ढूंढना पड़ा. एक्चुअली हवा में प्लेन गया किधर, कहां क्रैश हो गया. ओके, डिस्टेंस विच वॉज टू कवर्ड इन 2 hours वॉज नॉट इवन कवर्ड. प्लेन हवा में गायब. तो ये सब चीजें एक तरह से रीजंस फाइंड आउट करना होता है टू, सो दैट यू कैन अवॉइड द रिस्क. इनफैक्ट आज भी बोलते हैं कि वी लिव इन अ सैटेलाइट एज बट स्टिल द प्लेन फ्रीक आउट. ऐसा कैसे चला गया. तो ये चीजें रिस्क आइडेंटिफिकेशंस करती है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप इज. शी फ्रीक्ड आउट. ओके, एंड risk identification requires documentation of risk by maintaining registers. ओके, तो एक तरह से हम रिस्क का रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं ना, तो समझ में आता है. इन शॉर्ट, व्हाट यू नोट इट इज हाउ यू आइडेंटिफाई इट. जब आप अपने बारे में नोटिंग करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग. दैट्स कॉल्ड जर्नलिंग. जब आप अपने लाइफ की जर्नल खुद लिखने लगोगे, तब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगोगे. ओके, एंड दिस इंफॉर्मेशन is used for analysis. Say for example, अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं, लेट्स से मेरा एक ट्रक है जिसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. Okay, and it has to pass through the mountain terrains. Mountain terrain across it.
and then it will go and all the way your destination. ओके, तो जब मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता हूँ कि इट विल बी गोइंग इनटू अ डिफरेंट टेरेन जोन्स और कई अप्स एंड डाउन से होके माउंटेन को पूरा वो क्रॉस करके जाएगा, तो आई अंडरस्टैंड उसको बीच में पेट्रोल लगेगा, बीच में उसके टायर खराब हो सकते हैं, बीच में कुछ और हो सकता है, ट्रक ड्राइवर को रेगुलर ड्राइविंग इतनी भारी पड़ सकती है. सो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द रिस्क कि उसको क्या क्या चीज़ें तकलीफ दे सकती है. ओके, और पीछे जो सामान बांधा है वो फॉर्मली बांधा है, कहीं ऊपर चढ़ते समय सामान तो नीचे नहीं उतर जाएगा. ओके, सो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द रिस्क. दैट्स व्हेन यू डू रिस्क आइडेंटिफिकेशन. ओके, दैट्स व्हाट यू डू रिस्क आइडेंटिफिकेशन. और ये करना क्यों है? एग्जैक्टली ये करना क्यों है? दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन. Objective of risk identification. Well, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने से एटलीस्ट पता तो चल जाता है कि हम लोग प्रेजेंटली किस पोजीशन पे हैं. So that helps. That risk identification ensures all potential risks are identified. Identified. क्या आप कहाँ जा रहे हो? Let's say you're going out somewhere. So you're identifying the risk. What can happen out there? What could I need it? And why are you doing it? So it minimize the negative impact it minimize the negative impact of project and threats and enhances positive impact. Okay? It is something like this. When you are well prepared, prepared for the eventualities, you are far more confident. और एग्जाम रूम में भी आप देखना, कुछ बच्चे होते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, इस बार वो पेपर फाड़ के ही आएंगे. ओके, तो या पूरा करके आएंगे. So that's exactly what it is. आप outstation planning कर रहे हो and you have done almost every kind of possible arrangement, so you feel like very confident. लेकिन remember, till the time you are afraid to move, फिर बाहर रिस्क हो सकता है. You will never reach a destination. So you should take the steps also to move out. And then it provides information for next step. Okay? Say for example, you are planning an overseas trip. Okay? So you are planning an overseas trip and somebody is left behind home alone. Okay? And if you are left behind home, imagine. Okay? Imagine क्या करना, look at your own faces. तो यहाँ पर रिस्क का एलिमेंट कहाँ पे फ्लो कर सकता है, किस नेचर में, किस पर्सन के लिए, कैसे कहना बहुत मुश्किल है. ओके, आप ट्रिप के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जाने के उधर जाके ये होगा वो होगा, उसकी प्लान रेडी है, और अगर आप उधर पहुंचते हो
कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हुआ तो अगर आप रेडी थे तो वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। दैट्स वेयर सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई। तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई द रिस्क, मैं क्या करूं? ओके, तो सबसे पहले तो हमें वो फैक्टर्स ही ढूंढ कर निकालने हैं कि जिससे रिस्क है। तो यू कैन से क्रिएट a systematic object, or other objective color, systematic objective to identify factors of risk। तो क्या क्या रिस्क है या हो सकते हैं, ठीक है। हो सके तो इंफॉर्मेशन इज द की, तो गैदर ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर, all possible information, gather all possible information for effective risk management। For effective risk management, as far as possible gather all the possible informations keys that is required, and then एक बार रिस्क आइडेंटिफाई किया तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्निक्स है शुरू करने का, तो अप्लाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन tools and techniques। और जैसे मैंने बोला, आपके टेबल पे ही अपना इवैल्यूएटर कैलेंडर रखो, तो मालूम पड़ता है कितने दिन मैंने ये जो मेरे कमिटमेंट्स थे वो किए, नहीं किए तो मालूम पड़ता है क्रॉस, ये नहीं किए तो एक वीक में मेरा परफॉर्मेंस दिख रहा है, एक महीने में मेरा परफॉर्मेंसेस दिख रहा है। मुझे अपना ही इवैल्यूएशन, और आप चाहिए तो पैरामीटर्स लिख के रख सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स आपको चाहिए। ओके, या तो अर्ली मॉर्निंग को, या 1 आवर ऑफ रीडिंग, या हाफ एन आवर ऑफ रीडिंग, या ये एक्सरसाइज, या ये वो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लर्निंग ही या रीडिंग ही पार्ट है, इट कैन बी वेरियस पैरामीटर्स, और आप उस पैरामीटर्स के हिसाब से उसके कोड वर्ड्स लिख सकते हो, ई फॉर एक्सरसाइज, री, आर फॉर रीडिंग, दिस फॉर दिस, और वो कैलेंडर के ऊपर लिखते जाओ, तो पूरा हफ्ता आपका इवैल्यूएशन हो जाए। तो इट हेल्प्स यू टू इम्प्रोवाइज एज अ पर्सन। Got it? And fourthly, document the risk identified in risk register। ओके, तो जो भी रिस्क आपने देखा, इसलिए बोला कीप योर ओन जर्नल्स। आप अपने बारे में, आपकी सोच के बारे में, एग्जाम के टाइम पे तो आपको इतने सारे थॉट्स आएंगे, उसके लिए जर्नल रखो ना, लिखो, उसके अंदर एक से एक तरीके आएंगे याद करने के, इसके बारे में ख्याल आएंगे, उसके बारे में ख्याल आएंगे, लिखो, सब लिख के रखो, और अपने दिमाग को बोलो ये बाजू में रखो, मैं बाद में देखती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बाद में एक फीडबैक बनती है, और अगर आप डेली का लिख रहे हो ना, यू विल बी सरप्राइज टू सी योर सेल्फ कि एक साल में आपने कितनी सारी चीज़ें सोची थी जो आप अपने खुद के लिए कर सकते हो। ओके, आई हैव केप्ट माई ओन जर्नल्स फ्रॉम 2010, आई हैव सो मेनी ऑफ देम टुडे, बट इट हेल्प्स मी टू एनालाइज, टू गो बैक एंड सी कि ये टाइम पे मैंने ये भी सोचा था, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव, कि मुझे कोई सेल्फ हेल्प बुक की जरूरत ही नहीं, द नेचर वॉज गिविंग मी टीचिंग्स डेली विच इनिशियली वॉज इग्नोर्ड, बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो ये चीज़ आप अपने लिए अभी से कर सकते हो
It will help you by the time 5 years down the line when you start thinking कि मेरे करियर में मुझे और क्या करना चाहिए, read your own journal, it will speak to you. आपके खुद के प्लान्स आपको आके गए होंगे. Okay, and then that's how risk is identified and documented in the register. क्यों? ताकि हम फ्यूचर में ये चीज या ये गलती वापस न करें, इसलिए. And analyze the documented register, or rather risk register, and choose effective processes or the process for completion of project. तो किसी भी तरीके से रिस्क को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह उसको समझो, उसको जानो और फिर उसको कंप्लीट करने का काम करो. यहाँ पे इसको जान के और समझ के करने के लिए एक अच्छा तरीका दिया गया था, दैट इज कॉल्ड 7 identification tools या essentials. 7 identification tools या essentials. ओके, ये आइडेंटिफिकेशन टूल्स या essential है क्या? दिस इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग. आपस में डिस्कस करके, सोच के, समझ के फिर आप, इसलिए कई बार आप अगर अपने आप को नहीं पहचान पाते, आस्क योर मदर, फादर, फ्रेंड, हेल्प यू आउट. वो आपको आपके वो क्वालिटीज के बारे में भी बता देंगे शायद जो आपने अपने बारे में कभी सोचा. और चाहिए तो लिस्ट आउट थिंग्स एंड इट हेल्प्स आउट. ओके, इट माय वाइफ हेल्प्स मी आउट कि नहीं, योर दिस क्वालिटी इज नॉट देयर, योर दिस क्वालिटी. Why? Because then we help each other out to evaluate, to do best part of each other's. तो उसको भी वर्क में हेल्प करता है, मुझे भी हेल्प करता है. तो इट इज गिविंग मी अनदर फ्रेमवर्क जो कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था. इट एक्चुअली हेल्प्स गुड थिंग्स टू बी डन इन दी, you can say, in your family, in your life, in your level of success that you want to achieve in future, or how do you foresee in years to come. बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अपने आप को खुद को धीरे धीरे उस चीज़ के लिए अडेप्ट एंड इम्प्रूव कर पाओ. ठीक है, बिकॉज चाहो नहीं चाहो आपकी लाइफ अब आने वाले दिसंबर के बाद से वर्क लाइफ धीरे धीरे वैसे चेंज होगी जिसमें आप एक मैच्योर पर्सन की तरफ जाते जाओगे और आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. Okay, they will be asking you to have to take your own things in your own hand now. तो आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगी और कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको भी आपकी फैमिली बोले मेक योर ओन फैमिली नाउ. But nothing is bad about it. The thing is that you have to understand that are you capable to have it? क्योंकि a family is a commitment also with many segments. तो ये चीज़ें आपको अब धीरे धीरे समझनी है, बिकॉज यू आर जस्ट ऑन द वर्ज टू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड एंड से आई एम कमिंग. ओके, बहुत नेगेटिव लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारे रिस्क हैं बाहर, बट दैट्स वेयर यू हैव टू फाइट विद देमसेल्फ एंड योरसेल्फ टू पुश योरसेल्फ हार्ड अहेड. ठीक है, मिलेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. कितने लोग मिलते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, my identification process is brainstorming. Okay, the 7 tools are
First one, you can say team participation. Team participation. That's what is needed. That is face-to-face interactions. Face-to-face interactions is essential for better communication. Got it? And it has been seen over the period. हम लोग इतना आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी पे घुस चुके हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट तक सिचुएशन पहुंचती है तब या तो तुम उसके कैबिन में या वो तुम्हारे कैबिन में आके सामने सामने बैठ के बात होती है। ये बात प्रोजेक्ट के स्टार्ट होते समय भी सामने सामने हो सकती थी और बीच में भी कई बार, लेकिन तब तक नहीं होती है। जब सिचुएशन उस लेवल पे पहुंचती है, जब आपका CMD या CEO बोलता है आप सामने सामने बैठो, क्लियर द थिंग्स, सॉर्ट इट आउट। तो टीम पार्टिसिपेशन उस चीज को बोलते हैं। एंड देन repetition. In fact, repetition is the mother of all skills. Okay, repetition is the mother of all skills. तो जिसने 4 अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव में दिए हैं तो मालूम है उसका सब्जेक्ट वो कभी नहीं भूली होगी या भूला होगा। तो information that changes in risk management, process can be focused by repetition. Okay, even James Clear in his book Atomic Habits, he insists on repetitions because he knows that habits when repeated become so common in your thing कि बाद में आपको वो बर्डन लगते ही नहीं है। ओके, आपको धीरे धीरे उसकी समझ आ जाती है और आपको वो बर्डन लगते ही नहीं है। देन अप्रोच। कई बार पूछते हैं व्हाट इज योर अप्रोच टू योर लाइफ, एंड वी आर लाइक जिंदा है। So we don't have such things. So certain objectives is needed. Certain objectives requires distinct approach. कुछ लोगों की अप्रोच होती है, they want everything faster. They will work very hard for that, but they want everything faster. कुछ लोग सटल चल रहा है, जिंदगी चल रही है ना, आराम की जिंदगी है यार, लंबा जीने का है तो काय को इतना क्यों। They have that kind of approaches. कुछ लोग इन दोनों के एक्सट्रीम्स के बीच में है, कभी वो थोड़े फास्ट होते हैं, कभी वो स्लो हो जाते हैं। So it's like flowing between the pendula. तो कभी वो लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ने का, ये करने का, फिर दूसरे दिन संडे मॉर्निंग में छोड़ना यार। So that is the approach. You need to have the approach to identify failures. Okay? One method is to identify root cause of all impacts. Okay? In simple words, आपकी जिंदगी में आज तक जो भी कुछ हुआ है, कभी पूछा है कि ये क्यों हुआ है और what was the last root cause for that?
If you have taken CS, okay, but what was the root cause to divert all the way to this course? Got it? Who forced you to pass out 10th standard? Okay. So if your mummy is a root cause, find it out. Okay, what made her think that I can pass 10th also? If she has that kind of confidence, she tells us the root cause, then that same root cause can work for many things in your life. Documentation. Okay, documentation का मतलब होता है write it. When you write it, you live it. So consistent, put it again, consistent and proper documentation leads to reliable solution. Okay, so if you write things down and you write it consistently down, तब आपको solutions दिखते हैं, काम करता है. And the famous theory, the cause and the effect, उसके ऊपर बेस्ड होता है roots and symptoms. The roots and the symptoms. Okay, so in risk identification phase, find root cause instead of mistaking them as symptoms. Okay, so find out क्या था reasons, what was there deep down yourself that made you the way you are, and वही चीज आपको आगे. हम लोग majoritarily we are worked by symptoms. हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, हमें पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे हर जगह पे फोर्स करती जा और हम उसी जगह चलते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो, खूब सारा क्राउड है, तो आप जहाँ जगह देखते हो आप वहाँ पे चलते जा रहे हो, बट आर यू वॉकिंग योर विल? नहीं, यू आर वॉकिंग वेयर द क्राउड इज फोर्सिंग यू, दे आर गिविंग यू स्पेस एंड यू वॉकिंग फ्रॉम दैट. यू नॉट वॉकिंग योर विल. अगर आपकी विल हो तो आप तो सीधा से चलते हो, सामने कौन आएगा? Here, so that's where symptoms and roots are different things. Find out the root cause for what you are and what you should be. Things will differ. And yes, छोटी छोटी चीज़ों को रेट आउट करो, अपनी एक्सरसाइज, अपने परफॉर्मेंसेस, स्टडीज, अपने बाकी चीज़ों को रेट आउट करो कि कैसे उसको मैं ग्रेड आउट करूँ. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेटिंग इंडेक्स. Oh sorry, project identification तो हो गया, so that will be project definition rating. A PDRI. Okay, it is a risk assessment tool which helps to identify and mitigate programs
of high risk areas. Okay? So project definition rating index is like a tool that helps. मतलब जिंदगी में कभी कभी गलत कदम उठते हैं, जैसे माई फ्रेंड यूज टू स्मोक प्रोफ्यूजली, बहुत रेगुलर स्मोकर था, एंड उसको कई बार समझाया भी कि आइडियली स्मोकिंग इज नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट, अफेक्टिंग योर लंग्स टेरिबली, एंड देन ही वॉज स्मोकिंग सो मच, वो टेंशन जब लेता था तो ही यूज टू स्मोक सो मच कि उसको बाद में वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो गई. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ओके, आपके रिस्क, आपके एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि छोटी छोटी गलतियां आपको कहां तक गड़बड़ कर सकती. कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं. ओके, तो जब वो टेंशन में होते हैं तो दे ईट अ लॉट. क्लियर? तो दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई थिंग्स एंड उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है. छोटी छोटी चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगा कि किस तरह हेल्प करती है. ओके, सैडली उस टाइम पे तो सिखाने के लिए कोई था नहीं इतना हम लोग को, तो कभी ये चीज़ें समझी नहीं. फिर धीरे धीरे लाइफ ने सिखाता गया और अब किताबें पढ़ा तो अब मुझे मालूम पड़ा व्हाई वॉरेन बफेट रीड सो मेनी बुक्स. After completing my 100th book, then I start realizing, boss, the magic figure of 100 really works. Okay, now I have read many books also. अभी तो मैं अभी भी regular reading करता हूँ. I just completed yesterday Think and Grow Rich again. तो उसकी third reading हो गई है मेरी. तो वो सब चलता रहता है. But the point is now you start understanding, okay, why that thing was happening that way, जो हम लोग अभी तक नहीं समझ. Okay, and yes, the other thing is called event tree या decision tree approach. Okay, you can say it is used to study probabilistic risk assessment and understand all factors and faults to it. So that's called decision tree approach. Or it is like you write down myself, that is me becoming CS, me doing work life, me having social life, me having traditional or religious aspects. Now CS, me doing 2024, I will be a member. Okay, if not 2024, तो फिर कब कैसे, what shall be the outcome. Okay, if I fail into December, so December 2022, if I pass, तो पास होके मैं और क्या करूँगा. इफ़ आई फेल होने के साथ आर्टिकलशिप तो करते ही जाऊँगा एंड आई विल बी अ मेंबर इन 2024, लेकिन पास होने के साथ जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाऊँगा. तो क्या, दैट इज अ डिसीजन. क्लियर? ओके, नाउ 24 आई एम अ मेंबर. नाउ व्हाट? So now I enter my work life. Work life में what should be my expected pay? Should I get 1 lakh rupees per month? So how do I strive for that 1 lakh rupees per month? Okay, जब लोगों को करोड़ों रुपया भी मिलती है पे, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन उसके लिए फिर मुझे क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? What should I have that the other guys should feel that they should pay me 1 lakh rupees? Okay, how do I create the value to their lives? How I am valuable to them so that they pay me that much. Or am I doing only work X? तो वर्क एक्स में मेरे को मिल रही है 25,000 रुपया. 25 को 1 लाख तक कैसे लेके जाऊं? और 1 लाख को फिर और बढ़ा के 5 को बढ़ा के 10 कैसे करूं? ये हो गया पैसों के बारे में. देन आई हैव सोशल लाइफ.
How do I manage my social life? Because work will eat away my time. Then I don't want to be away from my friends and other things also. ऐसा ना हो जाए कि सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग. Okay, and what about tradition and religion? Because धीरे धीरे they will demand time also in some or the other factors. Why? Because work life create pressures. So you need something which is religious, meditative to relax. ये होता है decision tree देना. And then if you get married, married gives you another family life. तो देन उसके अंदर उसका टाइम और टाइम के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ वर्क. गॉट इट? तो बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 लाइफ में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है. दैट्स कॉल्ड डिसीजन ट्री. क्लियर? Decision tree is one of the fabulous method to analyze where you are and where you should be. Then find out the gaps and fill it and climb to that level. Find out your faults, find out all the factors, understand them, and then climb it. That's how decision tree works. Clear? समझा? Okay? Clear everyone? तो ये कुछ